A very good morning, my dear students. Welcome to the psychology class. As you know, we are continuing chapter number 7, social influences and group processes. And we had covered the topic, what is group, the features of group, types of group, group formation, the determinants of group formation, the process. After that, the social influences on group behavior, the concept of social loofing, the concept of group polarization, and we start the social influences. So in the social influences, there are three important terms: conformity, compliance, and obedience. And we complete the concept of conformity, and we are continuing in just previous video the determinants of conformity. Okay? So today's topic is continuing the determinants of conformity. So in the determinants of conformity, there are 5 types of determinants. First one is size of the group, size of the minority, third one is nature of the task, fourth is public or private expression of behavior. And the fifth one is personality. Okay, so we already covered the previous 3 points: the size of the group, size of the minority, and the nature of the task. And today we are discussing the public or private expression of behavior and the personality. Okay, so public and private expression of behavior. So in the ASH technique, the group members are asked to give their answer publicly. That is, all members know who has given which response. So, however, there can be other situation, for example, voting by secret ballot, so in which the behavior of members is private, not known to other. So, less conformity is found under private expression than it is seen under public expression. ठीक है, जब किसी ग्रुप में आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो और आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो व्यू पॉइंट है वो सीक्रेट रखा जा रहा है. ठीक है, एक सपोज आपने अपना व्यू पॉइंट, अपना वोट जो है वो एक चिट के थ्रू एक बाउल में रखा, एंड द अदर पर्सन्स आर दे डोंट नो कि आपका क्या व्यू पॉइंट, आपने किसे वोटिंग दी. ठीक है, तो इस कंडीशन में जो कंफर्मिटी होती है वो लेस शो होती है, लेस कंफर्मिटी का चांस रहता है. जबकि जब आपको ये पता होता है कि आपका जो व्यू पॉइंट है, आपका जो आंसर है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सब लोग उसे सुन रहे हैं, सब लोग उसे असेस कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, तो वहां पे उस सिचुएशन में जो कंफर्मिटी होती है वो ज्यादा शो होती है. ठीक है, दैट मीन जब आपका जो भी बिहेवियर है, उसका जो एक्सप्रेशन है, अगर वो पब्लिकली हो रहा है तो ज्यादा कंफर्मिटी शो होगी, और अगर वो एक्सप्रेशन, बिहेवियरल एक्सप्रेशन प्राइवेटली हो रहा है, सीक्रेटली हो रहा है, सो डेफिनेटली आपकी कंफर्मिटी कम शो होगी, लेस कंफर्मिटी शो होगी. ठीक है, सो ये पॉइंट यही एक्सप्लेन कर रहा था. नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी. द कंडीशन डिस्क्राइब्ड अबव show how the features of the situation are important in determining the degree of conformity shown. So we also find that some individuals have a conforming personality, and such person have a tendency to change their behavior according to what others say or do in most situations. Okay? By contrast, there are individuals who are independent and do not look for norms in order to decide how to behave in a specific situation. So research has shown
that highly intelligent people, those who are confident of themselves and those who are strongly committed and have a high self-esteem are less likely to conform. Okay, and conformity take place because of informational influence, that is influence that result from accepting evidence rather than reality. ठीक है, that's mean personality factor ये explain करता है कि some peoples are more conform than the other ones. Why? Because of their personal characteristic, because of their personal attributes. So research and the studies show that the highly intelligent person who have a high self-esteem, high self-confidence, they are independent, they show less conformity as compared to other individuals who are dependent, who have a less self-esteem, less self-confidence, and who are dependent on someone else, or who are not a very high, or you can say the rigid personality. Okay, so they are so much flexible and they behave according to demand of the other person, according to influencing with other person. ठीक है, अगर other person उसे influence कर रहा है, किसी तरह से force कर रहा है, या कह सकते हैं कि किसी वे में उसे manipulate कर रहा है, so definitely they change their behavior. ठीक है, जैसा कि अदर पर्सन रिक्वायर्ड है, अदर पर्सन उसे कर रहा है, करने को कह रहा है. ठीक है, सो पर्सनालिटी फैक्टर भी एक ऐसा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है, ये डिटरमाइन करता है कि हम किस लेवल की कंफर्मिटी शो करेंगे, लेस और हाई. सो डेफिनेटली कुछ पर्सनालिटीज ऐसी हैं जो लेस कंफर्मिटी शो करती हैं, जबकि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो हाई लेवल ऑफ कंफर्मिटी शो करते हैं. नाउ कंफर्मिटी टेक प्लेस because of information influences, that is influence that result from accepting evidence rather than reality. So this kind of rational conformity can be thought of as learning about the world from the action of others. We learn by observing people who are the best sources of information about many social conventions, and new group members learn about the group's customs by observing the action of other group members. Conformity may also occur because of normative influences. ठीक है, यहाँ पे दो टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस की बात हुई है, इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंसेस एंड द नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंसेस पे जहाँ पे कॉग्निटिव लेवल पे चेंज हो रहा है, रैशनल लेवल पे आप कंफॉर्मिटी इशू कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन you show the conformity behavior. ठीक है, जबकि जो सेकेंड वन है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस, दैट इज इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स डिजायर टू बी एक्सेप्टेड और एडमायर बाय अदर. ठीक है, जो पर्सन है उसकी डिजायर है, उसकी एक्सेप्टेंस है कि वो जो भी अदर पर्सन उससे एडमायर कर रहे हैं उसके बेसिस वो कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है और वो कितना ज्यादा कंफर्मिटी शो कर रहा है. ठीक है, एंड इन सच केसेस पीपल कंफर्म बिकॉज डेविएशन फ्रॉम ग्रुप may lead to rejection or at the least acceptance of some from the punishment. ठीक है, so इस normative influence की वजह से जो लोग conformity show कर रहे हैं, they believe that they don't want to punish. ठीक है, they don't want to separate, और कह सकते हैं कि आप deviation behavior नहीं show करना चाहते, आप deviant नहीं होना चाहते ग्रुप से. You like to मेंबर ऑफ द ग्रुप, आप उस ग्रुप के मेंबर बने रहना चाहते हो और उससे सेपरेट नहीं होना चाहते, डेविएंट बिहेवियर नहीं शो करना चाहते. यू हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन, यू हैव अ फियर ऑफ पनिशमेंट, दैट्स व्हाई यू शो कंफर्मिटी. So non-acceptance of some from the punishment. So it is generally observed that the group majority determines the final decision, but in certain conditions a minority may be more influential, and this occur when the minority take a firm and a compromising stand, and thereby creating a doubt on the correctness of the majority's viewpoint. So this create a conflict within the group. ठीक है, समटाइम क्या होता है, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो आपकी मेजॉरिटी है वही डिसीजंस लेती है, वही नॉर्म्स डेवलप करती है और उसे उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर करने को, रोल करने को एक तरह से सोशली प्रेशराइज करती है. ठीक है, बट सम टाइम जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो भी ज्यादा इन्फ्लुएंसिव होता है और उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से जो मेजॉरिटी है उसे अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि समटाइम वो करेक्ट कर पाता है मेजॉरिटी को. समटाइम एक या दो लोगों का ही ऐसा व्यू पॉइंट आ जाता है जो इतना ज्यादा रैशनल लेवल पे होता है, इतना ज्यादा लॉजिकल होता है
कि आपकी पूरी माइंडसेट को चेंज करके रख देता है और अल्टीमेटली आपके डिसीजंस को, आपके नॉर्म्स को चेंज करता है। ठीक है, सो बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे माइनॉरिटी ने मेजर चेंज लाया है इन द मेजॉरिटी ग्रुप। ठीक है, मेजॉरिटी के डिसीजंस में ड्यू टू माइनॉरिटी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी सिंपली मीन्स बिहेविंग अकॉर्डिंग टू ग्रुप नॉर्म्स। ठीक है, सोशल नॉर्म्स। आप जब सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो, ग्रुप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर कर रहे हो, यू हैव a kind of arousal, a kind of evaluation fear, and you show behavior जिसे आप ग्रुप के साथ बिहेवियर करना चाहो। आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट का डर है और डेविएंट होने का डर है कि आपको सेपरेट ना कर दिया जाए ग्रुप से बाहर ना कर दिया जाए। ठीक है, ये जो फियर है इसकी वजह से आप अगर नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो, डिफरेंट रीजंस होते हैं नॉर्म्स को फॉलो करने के। सो दिस बिहेवियर शोज दैट कंफॉर्मिटी। नाउ द मूव टू द सेकंड पॉइंट, कंप्लायंस। Second one is compliance. So it was stated earlier that compliance refers simply to behaving in response to a request from another person or group even in the absence of a norms. ठीक है, so compliance क्या है? Compliance refers simply to behaving in response to a request from another person or group even in the absence of norms. ठीक है, that means without norms, वे अगर कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, कुछ रिक्वेस्ट करता है कि आप उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, वो जो कह रहा है उसकी बात मान लो और उस वे में बिहेवियर करो, उस वे में अपना एटीट्यूड चेंज करो। सो दिस इज नोन एज कंप्लायंस। ठीक है, जहां पे आप रिस्पॉन्स जो करते हो वो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट करते हो, जो रिक्वेस्ट कोई अदर पर्सन कर रहा होता है या कोई ग्रुप कर रहा होता है, इवन इन दी एब्सेंस ऑफ नॉर्म्स। यहाँ नॉर्म्स जरूरी नहीं है, नॉर्म्स का फॉलो होना और नॉर्म्स का इवन एग्जिस्ट करना ही कंपल्सरी नहीं है। यहाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आप किसी अदर इंडिविजुअल की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप बिहेवियर शो कर रहे हो। दिस इज दी compliance. A good example of compliance is the kind of behavior show when a salesperson come to our door very often, and this person comes with some goods that we really do not wish to buy, yet sometime to our own
surprise, we find that the salesperson has spoken to us for a few minutes and the conversation has ended with a purchase of what he or she wished to sell. So, why do people comply? ठीक है, ये जो बिहेवियर ये जो एग्जाम्पल है, ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है. समटाइम होता क्या है कि आप डोर टू डोर टेक्निक्स जो होती है, जहाँ पे सेल्समैन आपकी डोर तक आता है और आपसे कुछ परचेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है. एंड इवन स्टार्टिंग में आपका जो माइंडसेट रहता है, आपका जो एटीट्यूड रहता है, वो काफी निगेटिव रहता है उस चीज को परचेस करने के लिए. यू डोंट हैव नीड टू बाय सम गुड, जो भी गुड वो प्रेजेंट कर रहा है. सपोज वो कोई क्लीनर सोप, सपोज कोई सोप वो परचेस की बाय कर रहा है, सेल कर रहा है. सो डेफिनेटली यू डोंट हैव अ माइंडसेट, यू डोंट एटीट्यूड टू, यू डोंट वांट टू बाय द पर्टिकुलर सोप. ठीक है, आप नहीं खरीदना चाहते. बट स्टिल आफ्टर अ फ्यू मिनट जब आपसे वो कन्वर्सेशन करते हैं, आपको कन्विंस कर पाता है वो, और इस कन्विंस के थ्रू आपका जो कन्वर्सेशन एंड होता है वो उस सोप के परचेस पे होता है. आप उसे खरीद चुके होते हैं. इवन बाद में आपको रियलाइज भी होता है कि मैं तो खरीदने नहीं गई थी, बट उसने इतना कहा, उसने इतना कन्विंस किया, तो मुझे लेना पड़ गया. ठीक है, सो ये जो एटीट्यूड होता है, ये एक टिपिकल एग्जांपल है कंप्लायंस का. एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाई पीपल कंप्लाई, क्यों हम ऐसा बिहेवियर शो करते हैं. ठीक है, क्यों हम किसी के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग वो जो डिमांड कर रहा है, वो जो चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है. व्हाई पीपल कंप्लाई. So, in many situations, this happen because it is an easy way out of this situation. ठीक है, some cases में होता है, हम चाहते हैं कि इस conversation से हम बचना चाहते हैं. I don't want to continue this situation. ठीक है, हम उससे conversation जो है वो उसे continue नहीं करना चाहते, हम उसे break करना चाहते हैं, और हमें लगता है कि अगर हम खरीद लेंगे तो वो चला जाएगा और ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी. तो सम टाइम हम इस सिचुएशन से बचने के लिए, इससे स्केप करने के लिए हम इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं. एंड इट इज मोर पोलाइट एंड द अदर पार्टी इज प्लीज. सो इन अदर सिचुएशन देयर कुड बी अदर फैक्टर एट वर्क. द फॉलोइंग टेक्निक हैव बीन फाउंड टू वर्क व्हेन समवन वांट अनदर पर्सन टू कंप्लाई. ठीक है, so in many situations this happen because it is an easy way out of the situation and it is more polite and the other party is pleased. And in other situation there could be other factors at work. The following techniques have been found to work when someone wants another person to comply. ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स है जो ये एक्सप्लेन करती हैं कि why people comply. Sometimes तो हम no doubt उस सिचुएशन से बचने के लिए ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, but some other techniques which explain why people do comply. So first is the foot in the door technique. The foot in the door technique. Second one is the deadline technique. And the last one is the door in the face technique. ठीक है, ये 3 टेक्निक्स हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि व्हाई पीपल डू कंप्लाई. ठीक है, क्यों पीपल इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, कंप्लायंस बिहेवियर शो करते हैं. सो फर्स्ट वन इज द फुट इन द डोर टेक्निक. The person beings by making a small request that the other person is not likely to refuse. Once the other person carried out the request, a bigger request is made simply because the other person has already complied with the smaller request. So he or she may feel uncomfortable refusing the second request. For example, someone may come to us on behalf of a group and give us a gift. Something free and saying that it is for promotion. Soon afterwards another member of these same group may come to us again and ask us to buy a product made by the
ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज द फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर टेक्निक मतलब अगर आप फर्स्टली कुछ फ्री में आप मार्केटिंग करते हो और कुछ फ्री में सेल करते हो, सेल नहीं कह सकते, फ्री में गिफ्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद उसी वही पर्टिकुलर ग्रुप का कोई अदर मेंबर आता है और आपसे रिक्वेस्ट करता है कुछ परचेस करने को, सो आप कहीं ना कहीं बर्डन सा फील करते हो, ठीक है। यू फील कि अगर वो आया है, हमारे डोर तक आया है, सो डेफिनेटली हमें कुछ परचेस कर लेना चाहिए उससे। और इसमें कोई लॉस नहीं है, हमारा कोई हार्म नहीं है। इवन आई डोंट नीड, मे बी वी डोंट नीड द प्रोडक्ट, बट स्टिल इससे कोई लॉस भी नहीं है, हमारा यूज ही आएगा, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बेसिकली हमारे डेली लाइफ के से रिलेटेड होते हैं, डेली यूज की चीजें होती हैं, सो वी थिंक कि ले लेते हैं, परचेस कर लेते हैं। सो ये जो टेक्निक होती है, दिस इज नोन एज द फुट इन दी डोर टेक्निक, ठीक है। द फुट इन द डोर, दैट मीन फर्स्ट रिक्वेस्ट जो है उससे अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, विच इज द फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपके डोर पे कोई ऐसा इंडिविजुअल आया, कोई ऐसा सेल्समैन आया जिसने फ्री में आपको किसी चीज का सैंपल दिया एंड यू एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज अ फ्री, ठीक है। वो फ्री था इसलिए आपने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट टाइम दे गिव द सेम प्रोडक्ट, द सेम गुड विद द प्राइस, ठीक है। एक प्राइस के साथ वो आपको वो गुड सेल कर रहा है, सो आप फील करते हो कि मैंने पहले यूज किया है, मैंने अगर स्मॉलेस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो अब उसकी सेकेंड लार्जर रिक्वेस्ट जो है वो उसे मैं कैसे डिनाई कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये जो फीलिंग होती है ये आपको उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए एक तरह से प्रेशराइज करती है, एक तरह से मेंटली कह सकती है कि फोर्स करती है आपको, ठीक है। सो होता क्या है कि जब आप स्मॉलर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके बाद वो ग्रुप या वो जो भी इंडिविजुअल है वो उससे लार्जर सेकेंड रिक्वेस्ट, उससे लार्जर और बिगर रिक्वेस्ट लेके आता है एंड यू कैन नॉट डिनाई टू इट, और आपको वो फॉलो करनी पड़ती है, ओके। देन द सेकेंड टेक्निक इज द डेडलाइन टेक्निक, विच इज अ वेरी पॉपुलर टेक्निक। सो इन दिस टेक्निक a last date is announced until which a particular product or an offer will be available. The aim is to make people hurry and make the purchases before they miss the rare opportunity. So it is more likely that people will buy a product under this deadline condition, and then if there is no such deadline, ठीक है। इवन बहुत पॉपुलर साइट्स, आप Amazon और फ्लिपकार्ट से जरूर शॉपिंग करते होंगे, सो यू सी द Amazon और द फ्लिपकार्ट और द Myntra.com से, सभी में कुछ सेल्स चलती रहती हैं, द विंटर सेल, द समर सेल, द एंड ऑफ सीजन सेल, द एंड ऑफ द वीक सेल, ठीक है। ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, नथिंग एल्स। ये दिस इज द लिमिटेड पीरियड सेल, दिस इज द लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट मिनट ऑफ बाइंग फॉर मोर डिस्काउंट, ठीक है। ये सारी जो टेक्निक है ये इसी टेक्निक में आ जाएंगी, द डेडलाइन टेक्निक, ठीक है। सामने वाले इंडिविजुअल को आप जब लास्ट डेट और एक डेडलाइन दे देते हो कि दिस इज द लास्ट डेट, दिस इज द लिमिट, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपको इस चीज को परचेस करने के लिए इन दिस अमाउंट, सो आपको लगता है कि जल्दी से ले लेना चाहिए, हरी में आप आ जाते हो एक, और यू फील कि अगर आप नहीं खरीदा तो शायद लेट हो जाएगी, फिर हमें यही प्रोडक्ट महंगा मिलेगा, और आपके माइंड में ये सेट हो जाता है। बट एक्चुअली कंपनीज की ये जो डेडलाइन होती है ये सिर्फ फेक होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग पर्पस होती है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस टाइप की डेडलाइंस रखी जाती है। बट ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं होता। हर वीक, हर सीजन कुछ ना कुछ तो नया आता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया जाता रहता है, बट स्टिल हमें लगता है कि हमें हरी करना चाहिए और ये चीजों को परचेस कर लेना चाहिए। सो दिस इज द डेडलाइन टेक्निक। हर जगह आपको ये बहुत पॉपुलर मिलेगी, इवन हर चीज की मार्केटिंग में बहुत आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डोर इन द फेस टेक्निक। सो इन दिस टेक्निक you begin with a large request, and when this is refused, a later request for something smaller. So the one that was actually desired is made, which is usually granted by the person, ठीक है। The door in the face technique just opposite है the foot in the door technique, ठीक है। इससे just opposite ये टेक्निक है। वहां पे आप पहले स्मॉलेस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे, आफ्टर दैट आपके सामने एक बिगेस्ट रिक्वेस्ट रखी जा रही थी, एंड इफ यू आर एक्सेप्टिंग द स्मॉलेस्ट रिक्वेस्ट, सो आप जो बिगर रिक्वेस्ट थी उससे डिनाई नहीं कर पा रहे थे, उससे भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा था, बिकॉज आपने ये माइंडसेट बना लिया था कि मैंने पहले तो मान लिया था तो अब कैसे मना करूं, अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इन द डोर इन द फेस टेक्निक
जस्ट अपोजिट होता है, आपके सामने कुछ बड़ा डिमांडिंग रखा जाता है, कुछ बड़ी रिक्वेस्ट रखी जाती है, बिगर रिक्वेस्ट, एंड जब आप उसे डिनाई कर जाते हो तो आपके साथ बार्गेनिंग की जाती है और आपके सामने स्मॉलेस्ट रिक्वेस्ट रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ परचेस करने किसी शॉपकीपर के पास जाओ और आपने बहुत सारी चीजें अगर परचेस की हैं, आप उसका जो बिल पूछोगे वो बहुत ज्यादा बताएगा, फिर वो कहेगा कि मतलब वो अमाउंट पहले बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएगा, उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग वो उसे कम करता जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली आप जो लोएस्ट प्राइस होगा, जो कम प्राइस होगा, कम चीजों का प्रोडक्ट का प्राइस होगा, उस पर आप एक्सेप्ट कर लोगे और उससे आप परचेस कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज द डोर इन दी फेज टेक्निक, जहां पे स्टार्टिंग में बिगर रिक्वेस्ट रखी जाती है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, आप ले लो, बहुत अच्छा ऑफर है। उसके बाद लास्टली आपको बार्गेनिंग करके आपको छोटे अमाउंट पे एग्री कर लिया जाता है और आप एग्री कर जाते हो स्मॉलेस्ट रिक्वेस्ट पे, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि अब चलो लार्जर रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया हमने, बट अब कितना मना करेंगे, एक छोटी सी बात है, थोड़ा सा तो खर्च हो रहा है, लाओ ले लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है आपके बिहेवियर को, एंड अल्टीमेटली यू कंप्लाई विथ द पर्सन विच यू वांट टू इन्फ्लुएंस, ठीक है। So these three techniques which explain why people do show compliance, ठीक है, compliance behavior क्यों हम शो करते हैं। बेसिकली ये जो तीनों टेक्निक है ये मार्केटिंग की टेक्निक है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आप इसे अंडरस्टैंड कर पाओगे जो भी प्रोडक्ट्स सेल किए जा रहे हैं उसके थ्रू। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ओबीडियंस। As you know, obedience that's mean request made by authority person, ठीक है। जो रिक्वेस्ट होती है वो किसी अथॉरिटी पर्सन की तरफ से आती है, और रिक्वेस्ट वे में भी हो सकती है, इंस्ट्रक्शन वे में भी हो सकती है, ऑर्डर वे में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज द ओबीडियंस, द लास्ट मेजर टॉपिक। ओबीडियंस, ठीक है। When compliance is shown to an instruction or order from a person in authority such as parents, teachers, leaders or policeman, that behavior is called obedience, ठीक है। जब जो compliance मतलब रिक्वेस्ट होती है वो किसी अथॉरिटी पर्सन की तरफ से आती है और एज अ ऑर्डर, एज अ इंस्ट्रक्शन आती है, तो दिस बिहेवियर इज शो एज अ ओबीडियंस बिहेवियर। और बेसिकली एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, इवन लीडर्स और पुलिसमैन, तो that behavior is called obedience. And why people show obedience is easy to understand. Most of them it is because if we disobey, some punishment might follow, ठीक है। बहुत एक ही कॉज हो सकता है बेसिकली ओबीडियंस बिहेवियर शो करने का, बिकॉज वी डू नॉट ओबे, अगर हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, नहीं फॉलो करेंगे उनके इंस्ट्रक्शंस को, सो डेफिनेटली वी रिसीव सम काइंड ऑफ पनिशमेंट एंड वी वांट टू एस्केप द पनिशमेंट, हम उस पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, दैट्स व्हाई हम ओबीडियंस बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द ओबीडियंस।
Okay, when compliance is shown to an instruction or order from a person in authority such as teachers, parents, etc. So that behavior is called obedience. Okay, so this is obedience. This is all about today. Today you understand that the reasons why people comply. ठीक है, सबसे पहले determinants of conformity, after that the concept of compliance, and the reason why people comply, after that the concept of obedience. This is all about today. We will continue this topic obedience in the next class. Thank you so much, students.